हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हाय माय नेम इज़ मनीषा और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई गॉट रेडी ऑन दिवाली। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल ट्यूटोरियल. So if you like this video, please do subscribe to my channel and also hit the like button. So I'm starting with this Innisfree skin. This is their Bijasika range. This is basically good for troubled skin. And to hydrate my skin, मैंने इसको पहले apply कर लिया है. Then I'm going to apply my eye cream, which is from Toli Moly. For moisturizer, today I'm using the Make More Balancing Cream, and this is such a great moisturizer and perfect base for makeup. Then I have also applied some lip balm. नेक्स्ट आई मूव ऑन टू माई मेकअप और उसके लिए फ़र्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ एलेगल प्रो कंसीलर इन द शेड फॉन टू हाइड माई डार्क सर्कल एंड जो भी डार्क स्पॉट है मेरी स्किन के ऊपर. बेसिकली आई हैव डार्क सर्कल, सो आई एम गोइंग टू conceal that. Next, for foundation, today I'm using this Makeup Forever foundation stick, very little bit. ये creamy base foundation है, so it blends really well as you guys can see already. इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ apply नहीं करूँगी. I'm going to go straight towards the powder. I'm using this MAC Studio Fix powder, जहाँ पे भी मुझे फिक्सिंग की ज़रूरत है वहाँ पे. देन अगेन आई एम गोइंग टू गो अहेड विद द समीर काजी कॉम्पैक्ट पाउडर एंड अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस अंडर माई आईज. दिस इज़ अ लिटिल बिट लाइटर दैन द मैक वन, तो इसलिए आई यूज़ दिस जस्ट टू हाईलाइट माई अंडर आईज और जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत है थोड़ा सा. नेक्स्ट मैं ये शुगर का पैलेट यूज़ कर रही हूँ टू कंट्रोल माई फेस एंड ऑल्सो फॉर द ब्लश एज वेल, जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत है. एंड आई एम डूइंग इट वेरी स्लाइटली, बहुत ही लाइटली मैं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट माई बेस टू लुक रियली नेचुरल बट अच्छा भी दिखे. इसलिए आफ्टर अप्लाइंग माई कॉन्टूर एंड ब्लश आई एम गोइंग टू अप्लाई सम सेटिंग स्प्रे. आई एम यूजिंग द मैक फिक्स प्लस. ये आपके मेकअप को बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन के साथ ब्लेंड कर देता है. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग दिस नायका brow mascara to set my brows, and this is a very simple step and आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है. It looks really natural and nice. For highlighter, today I'm using this K-Beauty highlighter in the shade Frost. I don't really remember, but the brush I'm using is from Rufa Beauty. If you guys want to see a detailed review, then please let me know. I'll do that for you guys. For eyes today I'm using this Huda Beauty palette. So firstly I'm taking this brown shade और उसको मैं all over lid के ऊपर apply करूँगी because I want to keep this very simple. Next I'm taking this lighter brown shade and इसको मैं एक transition shade की तरह apply करूँगी on my crease areas and I'm going to blend द शेड जो कि मैंने पहले यूज़ किया है. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस ब्लैक शेड एंड इससे मैं एक स्मज्ड लाइनर अप्लाई कर रही हूँ. लोअर लैश लाइन पे भी मैं सेम ब्राउन शेड को अप्लाई करूँगी. उसके बाद मैंने एक न्यूड काजल लिया है एंड उसको अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लिया है. उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया है फ्रॉम द ब्रांड मेबलिन. फॉल्सीज मैंने अप्लाई किए हैं फ्रॉम द ब्रांड अतुल चौहान मेकओवर्स एंड द आईज लुक्स रियली नाइस. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट इट लुक्स रियली नाइस एंड एफर्टलेस.
फॉर लिप्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का लिप लाइनर इन दिस शेड कैरमल एंड देन उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर का लिपस्टिक. This is a very nice, beautiful magenta kind of shade. I don't really remember the shade name, but it's a beautiful magenta color. उसके बाद I'm going to apply my setting spray, and this is from Urban Decay. लास्टली मैं यहाँ पे एनास्टेसिया का बॉडी ग्लिटर ऑयल यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू गिव माई बॉडी अ रियली नाइस शाइन. आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ये मेकअप लुक ऐसा है कि आप रेगुलर बेसिस कर सकते हो इसको. इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट एंड लुक्स वेरी नेचुरल एज वेल. So yeah, I'll see you guys in my next one. तब तक के लिए bye, take care. I love you guys so much. Bye.